There's big news that is coming in with regards to the Bengaluru cafe blast case. The NIA has now got some clues with connection to the Bengaluru bomb blast case that took place in Rameshwaram cafe. Sources have told India Today terrorists Musawir Hussain had placed an IED inside the cafe. After examining more than 1,000 CCTV footages and continuous investigation, the NIA officials have now traced two suspects. The NIA has also indeed uncovered a link between the Bangalore blast and the blast that took place in Chennai. The NIA officials found that two suspects lived in Chennai, and in January and February, the plotting was done. The NIA is now looking at the angle whether Shabiz had come from Chennai and had planted the bomb, or was he just at other places also to do some recce. The source of the explosive, however, is yet to be ascertained. This is a big breakthrough being done by the National Investigative Agency. My colleague Arvind Oja is now joining me on the story. Arvind, ये काफी बड़ा जो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को जो सुराग मिला है, अब कोशिश वो यही कर रहे हैं जितना हमें समझ आता है कि चेन्नई और बैंगलोर ब्लास्ट के बीच में अगर कोई लिंक है तो उसके बारे में पता किया जा सकता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बेंगलोर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसमें मल्टीपल एजेंसीज ने इंडिया टुडे को ये कंफर्म किया है कि जो सीसीटीवी में आईईडी प्लांटर दिखाई दे रहा था वो उसकी पहचान हो चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि पहले से ही एक टेररिस्ट केस में वांटेड टेररिस्ट है मुसाविर हुसैन शाजिद, जो कर्नाटका के शिवमोगा का रहने वाला है। वो ही था जिसने आईईडी प्लांट की थी, और उसके बाद वहां से वो कई रूट से भागते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। शिवमोगा केस में ही इसके ऊपर 3 लाख का इनाम एनआईए ने रखा हुआ है। दूसरा सस्पेक्ट भी माना जा रहा है कि वो भी इसके साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, जिसका नाम अब्दुल मतीन ताहा बताया जा रहा है। वो भी शिवमोगा का ही रहने वाला है, कर्नाटका का। उसने ये जो आईडी ब्लास्ट था इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ दिया। हैरानी की बात है कि ये दोनों पहले से ही शिवमोगा आईएसआईएस मॉड्यूल केस में वांटेड चल रहे हैं। एनआईए इनके ऊपर कैश रिवॉर्ड भी रखा हुआ है, और उसके बावजूद भी एजेंसियों को चकमा देते हुए इन लोगों ने दोबारा आईईडी ब्लास्ट बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में किया है। तो ये आइडेंटिफाई जो सोर्सेज है उन्होंने बताया कि इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये कोई और नहीं बची शिवमोगा मॉड्यूल है, वही शिवमोगा मॉड्यूल जिन्होंने मैंगलोर में कुकर में जो ब्लास्ट हुआ था वो उसी शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। तो आइडेंटिफाइड मुसाविर हुसैन शाजिब को किया गया है, और ये सोर्स बता रहे हैं कि इसी ने आईडी रखी थी। ऐश्वर्या, तो अरविंद, ये काफी बड़ा एक जो क्लू है वो मिल चुका है एनआईए को। अब नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए, एनआईए को मिला है, लेकिन इसके अलावा और भी एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज, वो भी इस मॉड्यूल के अब पीछे लगी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये काफी बड़ा मॉड्यूल है। और अगर ये मॉड्यूल पहले से बस्ट हो चुका है, इनके टेररिस्ट के ऊपर कैश रिवॉर्ड है, बावजूद उसके अगर ये अटैक कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ये मॉड्यूल काफी डेस्परेट है, काफी ज्यादा खतरनाक है, और कहीं न कहीं इनको और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से इन्होंने दोबारा वांटेड होते हुए भी आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। जी अरविंद, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय कॉलीग Sagai is also joining me on the story. Sagai, our colleague Arvind made a very important point, and he said that the clues obviously have been found out, and because a lot of agencies are now looking at the blast and investigations are going on. But one thing which stands out is the fact that these are people who have already been wanted, and they do have rewards on their heads. Absolutely. All these people are a network, and what we get to learn through our NIA sources is that they all belong to Shivamoga district of Karnataka. Remember Muhammad Sharik, who has been arrested in a Mangalore blast case, and it was the ISS Shivamoga module which the NIA has found out in that particular blast. And subsequently there was investigation which was being done, and they have arrested a few people connected to them. And apart from that, there were a couple of them who were absconding in that ISS Shivamoga module. And now what the NIA have come to a conclusion that these accused who had involved in Rameshwaram cafe blast have connection with all those terror accused who have already been arrested by NIA in Mangalore blast case. So probably the network is huge. As Arvind Oja was pointing out that reward has already been announced. They are in the wanted list, and they were absconding when Sharik, other Mazhar, and many more people who were arrested. And now they have found out the module
the modus of operandi which was used in Mangalore blast as well as Rameshwaram blast is quite similar, where they have used timer, where they have used bolts and nuts, and explosion seem to be quite similar. So joining the dots, they have found out that he is the person who was staying in Triple Cane in Chennai in the month of January and February, and he had purchased an hat which was only limited version in one of the malls in Chennai, and they took the sample of the hair in the hat, and that's when they found out that he is a person who is linked with Sharik and few other people in Shivamogga module. Thank you, Sagai, for giving us all those details. A big breakthrough being done by the NIA with regards to the Rameswaram Cafe blast in Bengaluru.